Hello guys, I am Shubham from Tutorials. This video is the part 6 of DBT JRF PYQs. Okay, so before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new video is out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. First question, which one of the following genes provide herbicide tolerance? Now this concept of antibiotics and which genes they control. So this is a chart. Okay, बहुत रिपीटेशन यहाँ से भी आया है, right? I am adding this. You can save. So here जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है herbicide tolerance. So you can see this is the answer here. Confers resistance to phosphoinothricin and herbicides, right? So the markers are this one. Okay, phosphoinothricin, right? तो बाकी का यू कैन रिफर, बट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. ओके, दिस सिंगल टेबल कैन आंसर related question like this, right? Next, during cell cycle genome replication occurs in, very easy, replication, genome replication, DNA replication S phase में होता है. Got it? S phase. Then plant transformation method that uses tungsten or gold particle coated with DNA accelerated at high velocity is called. See, very easy it is, right? पता भी नहीं है तो भी आंसर कर सकते हो. I will tell you how. Plant transformation मतलब जीन का ट्रांसफर करना है. Okay, that uses tungsten or gold particle, right? गोल्ड पार्टिकल यूज किया है, टंगस्टन यूज किया है, कोटेड विद डीएनए, राइट? उस पार्टिकल को कोट किया है डीएनए से. एक्सेलरेटेड एट हाई वेलोसिटी मतलब हाई स्पीड से एक्सेलरेशन करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड पार्टिकल डिलीवरी मेथड? नो, एग्रोबैक्टीरियम क्या है? ये नहीं है. पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड, यस. ओके, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट. सी, हाई वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करेंगे, राइट? बॉम्बार्ड मीन्स व्हाट? मीन्स वेरी हाई स्पीड force is used, powerful force is used. So this is also called as biolistic. Okay, biolistic. gene gun भी बोल सकते हैं इस मेथड को. ओके, so these terms are very important. पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट हमने देखा है, राइट? तो ये आंसर होगा. अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना, टर्म्स बेसिकली यूज किया है उसमें, लाइक हाई वेलोसिटी जीन डिलीवरी मेथड. ओके, दिस इज वेरी सिंपल टर्म, बट ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, राइट? सो ये आंसर नहीं होगा. एक्सेलरेटेड जीन डिलीवरी मेथड, ओके, ये भी टर्म अच्छा लिखा है, बट ये हमने देखा नहीं है, किधर पढ़ा भी नहीं है. तो नॉट दैट. थियरी में पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड, जीन गन, बायोलिस्टिक, ये टर्म्स एनकाउंटर किए हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following chemicals enhances Vir gene expression in agrobacterium? Right, agrobacterium में Vir gene का expression. Dextran? No. Direct question है, right? Acetylsyrinzone आंसर होगा. Okay. Acetyl carboxylic acid? No. Acetyl salicylic acid? No. तो acetylsyrinzone ये जीन का एक्सप्रेशन इनहेंस करता है, राइट? वीर जीन. हमने प्लांट डिस्कस नहीं किया है हमारे चैनल पर, बट दीज क्वेश्चंस आर ह्यूज रेपिटेशन, so I am adding this. Okay, and ये सिंपल है, you can remember, right? But I will be covering plant. Okay, so stay tuned with the channel because plant physiology एक important unit है. A classical plant breeder
wants to develop a disease resistant variety. Okay, disease resistant variety develop करनी है. What is the first step? So ये भी easy है, logical है आंसर करना. तो डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन्स, ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है क्या? नो, बिकॉज इन ब्रीडिंग के लिए पहले हमें चाहिए कुछ, राइट? सो दिस विल नॉट बी द फर्स्ट स्टेप. सिलेक्शन ऑफ नेचुरली रेजिस्टेंट लैंड-रेस, यस, राइट. डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट अ प्लांट विच इज नेचुरली रेजिस्टेंट. ओके, तो ये आंसर होगा कंफर्म. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स, ये भी फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता. व्हाई? हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता ना. फर्स्ट वी वांट समथिंग, so no. Same here with the next option, production of near isogenic lines, direct not possible. Okay, now this is from photosynthesis, very important. Okay, use repetition is seen, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं. Which one of the following is correct sequence of electron transfer in the thylakoid membrane during light cycle of photosynthesis? So basically I will show you diagram. Okay, you can save this. Okay, this is very important, right? See, first photosystem 2 है, then photosystem 1 है. Okay, small number 680 excite होता है, right? Excite होता है, then your cycle starts. So PO15 है, प्लास्टोक्विनोन है, right? Then it is cytochrome B6F complex है. Okay, here यहाँ से 700 के पास. So what happens basically here? तो electrons transfer हो रहे हैं, right? And this 700 get excited, and ये भी यहाँ पे थाइलोक्विनोन आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, राइट? फेरोडॉक्सिन, FD मींस फेरोडॉक्सिन. दिस इज रिडक्टेज, FNR. रिडक्टेज रिडक्शन करेगा NADP का NADPH. ओके, तो ये बेसिकली 2 स्टेप्स है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. तो ये जो यहाँ का जो एरो है ना, ये वाला फ्रॉम हियर लाइक दिस, ओके. तो ये जो है दिस इज साइक्लिक, राइट? एंड बाकी का जो Z है नॉन साइक्लिक. Got it? This you have to remember, right? So that is only the reason to cover PYQs, because हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, but the things which are asked in exam, that I will be showing you with important pictures or diagrams so that you can remember. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? P680 first, then plastoquinone, cytochrome B6F, plastocyanine and P700. ऑप्शन 2 आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the immediate effect of ABA dependent stomatal closure in plants? Okay, ABA हार्मोन है, प्लांट हार्मोन. नाउ स्टोमेटल क्लोजर, अभी स्टोमेटा अगर क्लोज हुआ है तो वाटर लॉस नहीं होगा, राइट? सी, दिस इज वेरी लॉजिकल. व्हेन स्टोमेटा इज क्लोज, नो वाटर लॉस, right? So transpiration will be reduced na. So reduced is present in option 2 and option 4. 1 and 3 eliminate हो जाएंगे.
नाउ व्हाट अबाउट फोटोसिंथेसिस? टोमेटा अगर क्लोज है तो CO2 भी एंटर नहीं कर सकता, राइट? तो CO2 if cannot enter means no photosynthesis, राइट? तो enhanced photosynthesis वाला wrong होगा, ऑप्शन 4 आंसर. ओके, water loss is basically what? Transcription, right ना? So option 4 reduced transcription and reduced photosynthesis will be answer. Flower development का model, ABC model of flower development determines organ arrangement in the sequence sepal, petal, stamen, carpel. Due to loss of class A gene function, the observed phenotype will be. Okay, see this is also very important concept, you have to understand. यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं. So this is a wild type. Okay, sepal, petal, stamen and carpel. Right. A gives rise to sepal. A plus B gives rise to petal. Okay. Then B plus C gives rise to stamen. And C gives rise to carpel. Right. You can see this picture. यहाँ पे सिर्फ A है, यहाँ पे A plus B, यहाँ पे B plus C, यहाँ पे only C. Got it? अभी क्या होता है? When these genes are lost, these are genes basically, class A gene, class B gene and class C gene, right? इसमें genes है that we'll be discussing in detail in plant physiology, but this is basic, I will tell you here. अभी क्या होता है? When A is mutated, A and C complement each other. Okay, मतलब अगर A नहीं होगा ना तो C इसकी जगह लेगा, right? And when C is not there, and A इसकी जगह लेगा. Got it? Okay, so this is very important. B तो सेंट्रल में है, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, यू कैन सेव दिस डायग्राम, राइट? मेक अ स्क्रीनशॉट. From this you can remember. See in the B picture it is given loss of class C activity. तो class C नहीं है, तो ये जो A है यहाँ पे रिपीट होगा, सेपल एंड पेटल, राइट? तो सेपल पेटल पेटल सेपल ऐसा होगा. ओके, इन लॉस ऑफ क्लास A एक्टिविटी यहाँ पे कार्पेल बनेगा, A की जगह C, कार्पेल स्टेमन स्टेमन कार्पेल. And when B is lost, loss of class B activity, then you can see only A and C expression, sepal sepal carpel carpel. Got it? अभी जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है क्लास A जीन, when A is lost, sepal यहाँ पे नहीं बनेगा and carpel will be formed. तो ऑप्शन 4 आंसर होगा, carpel stamen stamen carpel. Got it? Next question, which one of the following enzyme is administered to dissolve blood clots during heart attack treatment? This I have added just because direct question है, important है ये concept, right? Heart attack treatment में use, right, to dissolve blood clots. तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोकाइनेज. You should know this, right? स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज करते हैं to dissolve blood clots during heart attack treatment. Next question, which is the last one? Match the enzymes in list 1 with the products items in list 2. Okay, this is also very easy to solve. जो options है
थोड़े से यू कैन से शायद नहीं पता होंगे, बट फ्रॉम सिंगल ऑप्शन यू कैन सॉल्व. ओके, सिंगल ऑप्शन जो डी है, बीटा गैलेक्टोसिडेज. वी नो बीटा गैलेक्टोसिडेज इज एंजाइम. इसका आंसर होगा ये ऑप्शन 3, लैक्टोज फ्री मिल्क. राइट, लैक्टोज फ्री मिल्क मतलब लैक्टोज में क्या है? लैक्टोज इज व्हाट बेसिकली ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. राइट, so this is used for lactose free milk. D3 present only in option 4. Okay, and when this is solved, just remember other things. Right, match the following solve करना एकदम easy होता है and also quick. From single option you can answer the questions. Right, अभी ये जो thermolysin है, this is for aspartame. Aspartame is what? Artificial sweetener. Okay, and ये जो है penicillinase, acylase. This is option 2, A2, and alkalase is bioactive peptides. Okay, so that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.